Good morning, my dear respected students. And today, I think so. This is the last session for working with functions. That is chapter number 3. My dear respected students, hopefully the content is easily understood by you all. And it's my humble request that now you are supposed to give me the answers of each and everything, which I'm going to discuss with you all. Kindly concentrate on this program. Today, I'm not going to elaborate by myself. I'm just going to ask questions and you all are requested to kindly sort out and give answers of my questions. Kindly concentrate, my dear respected students. Here it is. First of all, we begin from a main section, that is where list 1 having a values. Kindly mention in a chat box that the values which is being stored in a list 1. Be quick. I'm waiting for your responses and you all are requested to kindly participate. List 1 having a values dash values. Be quick, be quick, be quick. अरे वाह आज प्रभजोत का मैसेज आया पहले. Very good. Yeah, thank you. 1 and 4. Very good. After that, when we move towards a next line, kindly concentrate on screen as well, my dear respected students. It's my humble request. You all are requested to kindly concentrate on screen as well. Now, when we move towards this second line, my dear respected students, what will be the output? It says list before function call, comma list 1. Again, I think so. What will be the values? Very good, very good, very good. Be quick. What will be the values printed here? No need to type the message. Very good, very good, very good, very good, very good. Thank you very much. Okay. Now kindly make sure this thing, and you are supposed to make a picture in your brains that how the different list is supposed to be connected with each other. Now, what happened here? We are supposed to call that particular function, which is to be considered as a my function 4, and we are supposed to pass the list 1 from there here, from main section to a function, and here it is a formal argument is to be considered as a my list. मेरे बच्चों, अब my list के पास क्या गया? आप बोलोगे सर आप तो रिपीट बोल रहे हो, फिर भी टाइप करते जाइए फटाफट. my list के पास क्या गया? Very good. Be quick. Responses जल्दी से. अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह. मैसेज आ गया कि क्या गया वहां उसके पास. वेरी गुड. मेरे एक बच्चे ने लिखा है 1,4, जैकॉर ने लिखा है लिस्ट 1. दोनों सही हैं कि वहां पे 1 4 गया और यहां वहां पे लिस्ट 1 की वैल्यूज चलेगी. वेरी गुड, थैंक यू. नाउ द नेक्स्ट लाइन सेज, माय डियर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, inside function message will be displayed and again list receive my list. I think so here the values for my list is remain same as it is, which is being shared by a list 1, and both list 1 as well as my list is pointing to the same address. Those who are agree with my statement that both list 1 as well as my list is pointing to a same address, kindly type yes in a chat box. Very good. Be quick. Yes sir. खुशी खेती जी का आ गया, अनिरुद्ध जी का, हिया सयाल जी का. वेरी गुड. प्रभजोत एंड ऑल. वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा, सब बहुत लोगों का मैसेज आ रहा है कि यस. वेरी गुड, ठीक है. Now what happened, my dear respected students? One new list is supposed to be created here, and the name of that particular list is new, and that having the values 3, 5. My dear respected students, kindly tell me one thing. Now there is a new list which is considered as a new having a same reference of my list or list 1, or they are sharing some other reference. Very good. Type same or other. If you are agree that they all three having the same address, then type same. And if you are not agree, then you type other. Very good. अनिरुद्ध जी ने टाइप कर दिया. Very good, very good, very good. खुशी जी का भी आ गया. हिया सयाल जी, जयकौर जी. Very good. Great.
एक्टिव स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अब इसका रेफरेंस जो है, रेफरेंस इज डिफरेंट फ्रॉम अ माई लिस्ट एज वेल एज अ list one. Now what happened in the next line, my dear respected students? It says that now the list which is named as new is being passed to, okay, ये भाग गया, वापस आ जाते हैं, कोई नहीं, the new list which is supposed to be passed to a my list, and previously, kindly concentrate my dear respected student, previously what happened, my list sharing the reference of a list one, but now I think so the previous link is being destroyed, and now my list is supposed to be connected with or sharing the same reference of a new. मेरे को लगता है कि ऐसा हो गया. After that, my list dot append 6. Now tell me the value which is being stored in a new. Previously new having 3 and 5. Now what will be the values which is being stored after appending? Appending का मतलब मुझे पता है, कि मुझे लगता है सबको पता होगा कि append का मतलब क्या होता है. Very good, very good, very good, very good. I am waiting for your responses. What will be the value which is being stored in a my list as well as new? Because they're both pointing to a same address. They're both pointing to a same address. Very good. 3, 5, 6. Very good, very good, very good. And now what happened? List after change. अब यहां पे आपको कंसंट्रेशन की बहुत जरूरत है. List after change, my list. अब इस फंक्शन में my list के पास क्या वैल्यूज हैं? जल्दी से टाइप करिए. पिछली बार भी सिर्फ 3 लोगों ने टाइप करके दिखाया था मुझे, सिर्फ 3 लोगों ने टाइप किया. अब यहां पे माई लिस्ट, ये जो माई लिस्ट है इसके अंदर क्या वैल्यूज हैं? 3, 5, 6. अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा. नाउ वी आर कमिंग बैक टू आवर फंक्शन कॉल. अब यहां पे लिस्ट 1 के अंदर क्या है ये बताओ. वेरी गुड. अब माई लिस्ट में तो 3, 5, 6 लिख दिया. अब ये बताइए कि जब हम वापस आए, what will be the values which is being stored in a list 1? जल्दी से. 1,4. विनय जापरा जी का सबसे पहले आया. जापरा साहब थैंक यू. जय कौर जी थैंक यू. प्रभजोत कौर जी थैंक यू. अच्छा, मुझे कोई एक जना जो फुल कॉन्फिडेंस के साथ बता सके कि इसकी वर्किंग कैसे है, वर्किंग कैसे है. और यहां पे माई लिस्ट में, इस जगह पे माई लिस्ट में 3, 5, 6 क्यों आया, and why here it is 3, 5, 6 is not there in spite of we are getting the values 1 and 4. जो करना चाहता है एक बार मेरे से बात, वो हैंड रेज कर दे एक बार. इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट. बिना घबराए हुए, घबराना नहीं है. हैंड रेज की जरूरत थी मुझको आपकी. वेरी गुड, वेरी गुड. हैंड रेज एक बार कर दीजिए जो मुझसे विचार विमर्श करना चाहते हैं. अभी तक किसी का नहीं आया जो एक्सप्लेन करना करके दिखाए कि कैसे हो रहा है ये. वेरी गुड, वेरी गुड. आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर हैंड रेज. चैट बॉक्स में नहीं डालना, हैंड रेज करना है, हैंड रेज. वेरी गुड, 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 वेरी गुड. अच्छा, फिर मैं अपने आप बोल दूंगा. फिर अगर ऐसे करोगे तो फिर मैं अपने आप बोलूंगा आपको बोलने के लिए. वेरी गुड. अच्छा नहीं, चलो. संजना विरदी जी, यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज. संजना अनम्यूट कीजिए प्लीज. अरे वाह, ये हैंडरेज आया है, हैंडरेज आया है. अब किसका आया है ये देखता हूं. वेरी गुड, वेरी गुड. अरे वाह, अनिरुद्ध. अनिरुद्ध, मैंने किया, आपको अनम्यूट करिए प्लीज. सर मुझे लगता है कि जैसे पहले मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो उसके कारण ये लिस्ट 1,4 है. नहीं, ऐसा नहीं है मेरा बेटा. मेन एग्जीक्यूट होने का कारण नहीं है अनिरुद्ध जी. अभी अगर आप ये बात नहीं समझ पाए तो थोड़ी सी समस्या का समाधान आपको करना पड़ेगा. व्हाट हैपन हियर माय डियर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस प्रोग्राम, प्रीवियसली लिस्ट 1 एंड माय लिस्ट इज शेयरिंग द सेम एड्रेस. ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा सब लोग. प्रीवियसली
list 1 and my list is sharing the same reference, but after that when new list is supposed to be created here, in that case the reference of that new list is being passed to a my list. Now the same reference which is being shared by a my list and new is same in spite of list 1, and when we are supposed to append the value, that is 3, 5, 6, which is reflected in a my list, but when we go back to a list 1, it is not going to be display the same. Why so? Because they sharing a different reference. Kindly concentrate my dear respected students. देखिएगा आप जरा ध्यान से प्लीज, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को एक बार चेक करिए. एक्सप्लेनेशन लिस्ट वन. अच्छा मैं ऐसे करता हूं, 1 मिनट रुकिएगा. मैं सब लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं. आई एम जस्ट गोइंग टू अनम्यूट ऑल, क्योंकि मैं नहीं चाहता, एक बार सब लोगों की आवाज तो सुन लूं. ये लीजिए मैंने कर दिया. अब देखिए तो एक बार अनम्यूट कर सकते हैं आप सब लोग अपने आप को, प्लीज एक बार चेक कीजिए. अब जिसको, हाँ बस ठीक है, ओके डन डन डन. अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैं आपसे 1 बाय 1 पूछता जाऊंगा. ये देखिए लिस्ट 1 है मेरे प्यारे बच्चों. व्हेन वी आर सपोज टू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर, इट सेज दिस लिस्ट हैविंग अ पर्टिकुलर एड्रेस. ओके, आफ्टर दैट उसके बाद क्या हुआ, they are supposed to store 2 different values here. One is to be considered as a number 1. Here it is, the address of that particular is 1891 and 1900. It means these are the values. 1891 is 1 and 1900 is 4. It means list 1 having a value that is 1 and 4. After that, what happened when we call that particular function and pass the value, and my list is supposed to be shared the same reference which is being shared by a list 1. After that, what happened, my dear respected student, a new list is supposed to be created here, and what happened, they are supposed to store the 2 different values. First is to be called as 1899. Kindly concentrate. 1899 is to be considered as this 3 values there. And after that, here it is 1910, which says, here it is 1910, it says that 5 is going to be stored here. Now, very important thing, when we are supposed to pass the new to a my list, the reference, अब ये arrow देखा होगा आपने कि जो my list और list 1 के अंदर एक दोनों का लिंक था, वो एक लिंक चला गया. Now link is being established in between a my list and a, ये जो arrow आपको, ये वाला जो arrow नजर आ रहा है, my list and new. अब दोनों का रेफरेंस क्रिएट हो गया. ओके, अब दोनों का लिंक क्रिएट हो गया. What happened now, when we apply a append, 6 is supposed to be stored here with the address 1920. Now this new having a 3 different values, 1899 representing 3, 1910 representing 5, and 1920 representing the value that is 6. And they are sharing, both my list and new is sharing the same reference, that is this one for assessing the values. And here it is, list 1 is not linked with the other. That's why list 1 stores a value that is 1 and 4, and my list and new stores a value 3, 5, 6 each. जिन लोगों को मेरी बात समझ आ गई हो, वो कृपया करके हैंड रेज करने की कृपालता कर दीजिएगा. धन्यवाद. जल्दी से या यस कर दीजिए चैट बॉक्स में. मैंने अनम्यूट ही रखा हुआ है आप लोगों का. आप जब भी इच्छा हो आपकी तो आप अनम्यूट कर लीजिएगा. चैट बॉक्स में यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए जी, वेरी गुड, थैंक यू. Last slide for this particular chapter, my dear respected students. This is the last slide we are talking about for this particular, and it says, kindly concentrate. If here it is, what is mentioned on the top, mutable argument says A, assigned to a mutable parameter say P. If P is not assigned any new name, अगर उसको कोई नया नाम assign नहीं किया गया, or different value, different data type value, then changes in P are performed in place and get reflected back to the main. वो दोबारा आपको reflected back होंगी, दोबारा नजर आएंगी. Very good. Second point says, if P is assigned a new name or different data type value, then any change in P are not reflected back to the main, which is not reflected back to the main.
मेरे प्यारे बच्चों, this is the chapter what we are talking about, that working with functions. My respected students, the chapter is almost over, and if you have any kind of query, you can ask, or if you ask after the session, you can, no problem at all. And one more thing I want to add here: no hesitation while calling your teacher. There is no problem. Anytime, 24/7 you can call, and if possible, you can send your queries. I having one query pending from Khushi Kheti ji. As and when I found time, I am supposed to respond for the same. जैसे ही मुझे समय मिलेगा, मैं उनको खुशी खेती जी को रिस्पॉन्ड कर दूंगा. आप भी मैसेज कीजिए अगर आपको कोई ट्रबल आती है तो.